Hey, so for today I'm looking for a short in Nifty near highs. Stop loss is day high, very less stop loss, and I'm looking for it to come around 650-ish levels. That is around 100 points from here. Same goes with bank. I won't really short if this level crosses 39,380 on future, but if it doesn't, then yeah, I will rather focus on Nifty today because RR there is really good. Same on Reliance. If it crosses 2392, then it will blast. Otherwise, this looks good for sideways or short. But yeah, if right now Nifty is around 7755, stop loss is around 25 points, and the target can be 100 points. So it's a very good risk reward. आज मैं निफ्टी में शॉर्ट की उम्मीद रख रहा हूँ. मेरे को रिलायंस अगर 2392 तोड़ता है तो रिलायंस को डे हाई बनना चाहिए. अगर रिलायंस यहीं पे है तो वो शायद गिर जाएगा नीचे. बैंक निफ्टी में भी अगर 39,380 के ऊपर गया तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, पर आज के दिन सिर्फ मैं निफ्टी को देख रहा हूँ कि वो निफ्टी का आर बहुत अच्छा है. थैंक यू.